इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने लिमिट्स ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ा है। इसका मतलब कि लिमिट की क्या डेफिनेशन है ये हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। आज का टॉपिक हम लोग का है लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड लिमिट्स को ऑलरेडी हम लोग काफ़ी कुछ समझ चुके हैं, इसलिए लिमिट्स पर समय ज़्यादा नहीं देंगे। हम लोग डिस्कशन आज प्रॉपर डिस्कशन करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे। लिमिट्स क्या है, किसी भी फंक्शन की लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि किसी भी फंक्शन की लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट एंड आर इक्वल टू ईच अदर। बाय डेफिनेशन वी से दैट if limit extending to a plus fx is equals to limit extending to a minus fx exists, then we say that the limit of any function exists. Now we are focused on continuity. Any function fx is said to be continuous at x is equals to a if limit extending to a minus fx is equals to limit extending to a plus fx is equals to f of a, where f of a is defined as a value of function at x is equals to a। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस कहा जा सकता है अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करे, आपस में बराबर हो। इसके साथ ही जिस पॉइंट पर हम लोग फंक्शन के लिमिट के डिस्कशन की बात कर रहे हैं उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो, तब हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। इन ब्रीफ हम लोग कह सकते हैं, इन ब्रीफ we also say that any function fx will be discontinuous if any one of the holds first limit extending to a plus fx and limit extending to a minus fx exists but are not equals to each other. Second, limit extending to a plus fx and limit extending to a minus fx exists equals to each other
but are not equal to the value of the function at that point. Third point, the value of the function that is fa is not defined. Fourth, function is undefined. These points can be understood by doing an example. This example is fx is equals to any function fx is defined as any function fx is defined as fx is equals to mod of x divided by x, then what will be its continuity at x is equals to 0. This function is nothing but a signum function. You can write this. This function is also known as signum function. That means actually we are checking the continuity of signum function at point x is equals to 0. Solution. The continuity of any function says that any function will be continuous if left hand limit as well as right hand limit exist and are equal to each other and also equal to value of the function at that point. So first of all we have to find out the left hand limit. Therefore, first we find left hand limit. Therefore, left hand limit is equals to limit x tending to 0 minus fx, because we have to check the continuity of function at x is equals to 0. Therefore, here I am writing limit x tending to 0 minus. This can be written as limit h tending to 0 f of 0 minus h. Now this becomes modulus of 0 minus h divided by 0 minus h. Now again by definition of mod function it comes out to be plus h divided minus h. This is equals to minus 1. Now further step will be to find out the right hand side limit. Right hand side
that is RHL is equals to limit extending to 0 plus fx is equals to limit extending to 0 f of 0 plus h. Here definitely h is greater than 0. H is very small quantity but should be positive. It becomes limit h tending to 0 modulus of 0 plus h divided by 0 plus h. This gives limit h tends to 0, h divided by h is equals to 1. Here we can see that LHL is not equals to RHL. Hence we say that the limit of a function does not exist, therefore function is not continuous. This function, therefore we say that this function is not continuous at x is equals to 0 because left hand limit as well as right hand limit both exists but are not equals to 0, but are not equal to each other. इसमें एक चीज हम लोग और देख रहे हैं कि इस फंक्शन को बिना किसी मेहनत के भी हम लोग डिसकंटिन्यूअस कर सकते थे. क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो इस फंक्शन की कंटिन्यूअस हमें एट x इज इक्वल्स टू 0 पे चेक करनी है. तो ये फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 0 पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म की वैल्यू देता है या अनडिफाइंड हम इसे कह सकते हैं. तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा? जब फंक्शन की वैल्यू भी अनडिफाइंड हो, तो हम लोग डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है. इसलिए आप लोग इसे इसमें एक नोट लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन इज discontinuous because at x is equals to 0 f of 0 is equals to 0 by 0 which is indeterminate. indeterminate फॉर्म्स हम लोग ऑलरेडी इसके फर्स्ट टर्म पे पढ़ चुके हैं. is indeterminate. Now our next topic is properties of continuous functions. Properties of continuous functions. If we have fx and gx, two continuous functions, and C is any, then these continuous functions have following properties. First,
fx plus minus gx is also continuous function. Second, cfx or cgx is also continuous function. Product of two continuous functions. Product of two continuous functions fx into gx is also continuous. Fourth point, fx divided by gx is also continuous whenever g of a is not equals to 0. By these properties we say that the summation and subtraction of two continuous functions is also continuous, as well as product of two continuous functions is also continuous, division of two continuous functions is also continuous, but restriction is that the function at the denominator should be defined, otherwise we say that this is not continuous. Next, the converse of note. The converse of this result is not true. The converse of this result is not true. That is, we say that if addition, subtraction, multiplication and if addition, subtraction, multiplication and division of functions are continuous, then it cannot be always possible that the functions fx and gx are continuous. Remember this. This is an important note कि अगर दो continuous functions हैं तो उनका सम भी कंटिन्यूअस होगा, उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा, उनका सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, उनका डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा, और किसी कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई भी कर दें तो भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा. लेकिन अगर हम लोग के पास किन्हीं दो फंक्शंस कंटिन्यूअस फंक्शंस का सम है जो कंटिन्यूअस है, हम लोग ये नहीं कह सकते कि फंक्शन सेपरेटली कंटिन्यूअस है. हम लोग को ये कहना चाहिए कि अगर दो फंक्शंस का सम कंटिन्यूअस है तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो अलग अलग फंक्शंस भी कंटिन्यूअस हैं, या प्रोडक्ट दो फंक्शंस का प्रोडक्ट कंटिन्यूअस है तो सेपरेटली वो फंक्शंस भी कंटिन्यूअस होंगे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट. एंड पॉइंट मीन्स the continuity of any function at end point of closed interval AB.
closed interval AB. Continuity at endpoints. Here we are discussing the continuity of any function defined on closed interval AB at endpoints A and B. Any function fx is said to be continuous at x is equals to a if f of a is equals to limit extending to a plus fx holds and function is said to be continuous at x is equals to b if f of b is equals to limit extending to b minus f of x holds. इसका मतलब क्या है कि किसी भी फंक्शन कोई भी फंक्शन जो क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइंड है वो अपने एंड पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा अगर अपने लेफ्ट हैंड के एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाए और राइट हैंड पर फंक्शन की वैल्यू अपने लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर हो जाए तो फंक्शन इस क्लोज्ड इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस हो जाएगा. इसको हम एक तरीके से और भी कह सकते हैं या एक रिजल्ट निकाल सकते हैं. एनी फंक्शन result any function fx is said to be continuous on closed interval AB if it is continuous at each points between A and B as well as at the endpoints also. क्या हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी फंक्शन जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डिफाइंड है वह क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होगा अगर वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी के बीच के सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस हो जाए और साथ ही साथ एंड पॉइंट्स पर भी कंटिन्यूअस हो तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस है. इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं. हियर वी आर डिस्कसिंग द एग्जांपल ऑफ ब्रैकेट फंक्शन एट क्लोज इंटरवल ए बी. ब्रैकेट फंक्शन की भी क्या डेफिनेशन है ये हम लोग नेक्स्ट इसके पहले के लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं. एग्जाम्पल discuss the continuity of bracket function
on closed interval AB. First of all, we have to find out the continuity of bracket function at end points, and then the continuity in intermediate points. Solutions. We know that this function will be continuous at the end point 1 if f of 1, we know that bracket x will be continuous if f of 1 is equals to limit extending to 1 plus bracket x. Now this can be written as limit h tends to 0, h is obviously positive but a small quantity, bracket 1 plus h, this is equals to 1 using property of bracket function. Also f of 1, that is bracket of 1, is equals to 1. Hence we have f of 1 is equals to limit extending to 1 plus bracket x. Therefore function is continuous at the end point point 1. Similarly, we can check the continuity at the end point 2. For this, we should have f of 2 is equals to limit extending to 2 minus f of x, that is equals to limit h tends to 0, bracket of 2 minus h, that is again equals to 1. Using again the property of bracket function, but f of 2 is equals to bracket of 2, that is equals to 2. That is equals to 2. Therefore, we say that function is not continuous. Therefore, we say that function is 2 minus, that is 2 minus h is equals to 2. Not continuous at not continuous at x is equals to 2, the end point. Hence we say that the function is not continuous at end point x is equals to 2. Similarly, we can check at any interval point. We can check any interval point. Say x is equals to 1.5. Say x is equals to 1.5. Then continuity says that the value of the function at this point, which is bracket of 1 minus 5, is equals to 1.
and limit x tends to fx is equals to limit h tends to 0 greater than 0 bracket of minus h is equals to 1 and limit x tend to 1.5 plus fx is equals to limit h tends to 0 bracket of 1.5 plus h is equals to 1. Hence we find that function is continuous at x is equals to function is continuous at x is equals to 1.5. Therefore, at x is equals to 1.5, we say that function is continuous. But at end points, we say that the function is discontinuous. Therefore, we conclude that the whole function is not continuous. We also note that bracket function bracket of x may or may not be continuous it depends upon integral and non-integral values of x. Now next topic is types of discontinuity. There are two types of discontinuity. First, discontinuity of first kind. Second, discontinuity of second kind. Types of discontinuity. Types of discontinuity. There are two types of discontinuities. First, discontinuity of first kind. Discontinuity of first kind. Second, of second kind. Discontinuity of first kind. This is again are of two types. Again is of two types. First, removable discontinuity. Second, non-removable
नॉन रिमूवेबल और जंप डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मीन्स कि ऐसी डिसकंटिन्यूटी जिसको हम लोग कुछ वैल्यू वगैरह रीडिफाइन करके कंटिन्यूअस बना सकते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल डिसकंटिन्यूटी वो जिसमें हम लोग कुछ भी कोशिश कर लें वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है। इसके थ्रू समझ सकते हैं। एग्जांपल फॉर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, we have a function fx x and this is equals to p, x is equals to 0 where p is an integer. Where any integer. Now start to check, find out the continuity of this example. First we have to load the left hand limit. First find out the LHL. Therefore L is equals to limit extending to 0 minus fx equals to limit h tends to 0 f of 0 minus h. Now put the value of 0 minus h in the given function. We have limit h tends to 0. Of course h is greater than 0. 0 minus h sine of 1 upon 0 minus h. We know that sine of minus theta is minus sine theta. Therefore this limit becomes h tends to 0 minus of sine 1 upon h. This gives limit h tends to 0 h sine 1 upon h which is equals to 0. Since 1 upon h is less than equals to 0, हम कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू हमेशा 1 और -1 के बीच में होती है, इसलिए इसकी लिमिट 0 आएगी। Limit to 0 plus h sine of 1 upon 0 plus h is equals to limit h tends to 0 h sine 1 upon h. By the same region this also goes to 0. LHL is RHL, but we can say that in the given question the value of the function at x is equals to 0 is f of 0 is p. Therefore we say that function is not continuous at x is equals to 0. Function is therefore by the definition of continuity therefore
condition of continuity, we get function is not continuous at x is equals to 0, since LHL is equals to RHL but is not equals to f of 0 because this is P. इसे अब हम लोग कंटिन्यूअस बना सकते हैं क्योंकि रिमूवेबल कंटिन्यूटी यही कहती है कि कुछ हम लोग कंडीशन लगाएं तो ये कंटिन्यूअस हो सकता है। तो कंडीशन लगाने में क्या दिखता है कि अगर फंक्शन की वैल्यू p की जगह पे 0 हो जाए तो फंक्शन हो सकता है, डिफाइन करके हम कंटिन्यूअस बना सकते हैं। नाउ this function may be continuous if we can redefine the function, as fx is equals to x sin 1 when x is not equal to, and this is equals to 0 when x is equals to 0. Therefore, this type of discontinuity is known as removable discontinuity. Similarly, we can give an example of second kind discontinuity. Second kind discontinuity can non removable. इसको आप रीडिफाइन करके भी फंक्शन को कंटिन्यूअस नहीं बना सकते। इसका एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं जिसे आप बहुत इजीली सॉल्व करके देख सकते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और किसी भी तरह से ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो रहा। नॉन रिमूवेबल example of non-removable discontinuity. Any function fx is defined as fx is equals to e to the power 1 upon x, e to the power 1 upon x plus 1 when x is not equals to 0 is equals to 0 when x is equals to 0. इसे हम लोग आगे भी काफ़ी सारी एक्सरसाइज कर चुके हैं तो देख सकते हैं कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा एट एक्स इज इक्वल्स टू 0. यहाँ एक चीज़ समझने वाली है कि कई बार क्वेश्चंस में ये नहीं कहा जाता है कि फंक्शन को आप चेक करिए कि ये इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि फंक्शन जिस पॉइंट पर डिफाइंड होता है, जैसे फंक्शन x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 पे ये डिफाइंड है, फंक्शन x इज इक्वल्स टू 0 पे ये वैल्यू दे रहा है। तो अगर क्वेश्चन में ये नहीं भी दिया जाता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो ये समझ लेना चाहिए कि जो फंक्शन जिस पॉइंट पर डिफाइंड है हमें उसकी कंटिन्यूटी पॉइंट पर चेक करना। नाउ नेक्स्ट, कंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड डिसकंटिन्यूटी। Now second kind discontinuity. Discontinuity
any function fx is said to be discontinuous of second kind if left hand limit or right hand limit are not existing or infinite. For example, any function fx defined as fx is equals to 1 upon x at x is equals to 0 will be of second kind discontinuous since f of 0 is equals to 1 upon 0, that is infinite, or limit x tends to 0, fx is also infinite, hence we say that the function 1 upon modulus of x the function 1 upon modulus of x is of second kind discontinuous क्यों? क्योंकि फंक्शन की लिमिट इनफाइनाइट आ रही, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, सेकेंड काइंड का इफेक्ट। अब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर सकते हैं। कंटिन्यूअस हम लोग लिमिट की बात कर चुके हैं, कंटिन्यूटी की बात कर चुके हैं, अब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर सकते हैं। नाउ कम टू द differentiability of any function. First of all, we have to know the definition of differentiable functions. Differentiability. Any function fx is said to be differentiable at x is equals to a if